नमस्कार माझ्या प्रेमळ स्वामी भक्तांनो, तुम्ही खूप संकटात आहात का? तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला संकटाने सतावले आहे का? खूप प्रयत्न करून सुद्धा तुम्हाला काही गोष्टींमध्ये यश मिळत नाही का? भक्तांनो, तुम्हाला या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी एक स्वामी मंत्रच पुरेसा आहे. हा मंत्र संकटांना दूर पळून लावतो, तसेच तुमचे आयुष्य आनंदी आणि निरोगी बनवतो. तर मग भक्तांनो, तुम्ही हा मंत्र निदान 10 मिनिटे तरी ऐकला तरी चालेल. आणि जर हा मंत्र तुम्ही शेवटपर्यंत ऐकला तर तुम्हाला याचे उत्तम परिणाम जाणवतील. पण फक्त व्हिडिओवरती क्लिक करून स्किप करून सोडून देऊ नका. या मंत्राकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका. हा व्हिडिओ चालू करून मध्येच बंद करू नका. आणि लवकरात लवकर या मंत्राचा अनुभव घेण्यासाठी आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराज असे टाईप करायला विसरू नका. भक्तांनो, असे केल्याने तुमच्या आयुष्यातील संकटे ही दूर होतील. भक्तांनो, हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुमच्या मनात जे आहे ते तुम्हाला नक्कीच मिळेल. भक्तांनो, तुम्ही हा मंत्र फक्त एकदा ऐका आणि स्वतः हा मंत्राचा चमत्कार पहा. भक्तांनो, तुमचा स्वामींच्या शक्तीवर विश्वास आहे ना? विश्वास असेल तर तुमच्या मनातील इच्छा स्वामींसमोर व्यक्त करा. हा मंत्र ऐकताना तुमचे मन एकाग्र करा. भरपूर विश्वासाने, श्रद्धेने आणि अंतःकरणाने लक्ष देऊन हा मंत्र तुम्ही श्रवण करा. भक्तांनो, आज जर तुम्ही हा मंत्र संपूर्ण 108 वेळा ऐकलात तर तुम्हाला या मंत्राचा चमत्कार लवकरात लवकर पाहायला मिळेल. म्हणूनच भक्तांनो, आज दुर्लक्ष न करता हा मंत्र ऐकत रहा. भक्तांनो, या मंत्रासाठी जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर हा मंत्र चालू ठेवा. भक्तांनो, हा मंत्र तुम्ही फक्त ऐकत रहा. हा मंत्र ऐकल्याने सुद्धा त्याचा परिणाम आपल्या आयुष्यावर पडतो. भक्तांनो, तुम्हीही सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून थकला असाल, तुम्हाला कोणत्याच बाजूने आशेचा किरण दिसत नसेल, तुमचे नशीब तुम्हाला साथ देत नसेल, तर आज हा मंत्र अवश्य ऐका. या मंत्राबद्दल आम्ही खात्री देतो की आज तुम्ही स्वामींसमोर जे काही मागाल ते तुम्हाला लवकरात लवकर मिळणार आहे. म्हणून सांगते भक्तांनो, तुम्ही अजिबात या मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका. तुम्ही जर या व्हिडिओवर क्लिक केले असेल तर अगदी योग्य व्हिडिओ निवडला आहे. तुमचे दुःख दूर करण्यासाठी हा मंत्र पुरातन काळातील आहे, स्वामींच्या काळातील आहे. स्वामींचे लाडके भक्त स्वामी सूत महाराज हा मंत्र जप करत होते आणि या मंत्राचे नामस्मरण ते अगदी मनापासून करत होते. तर भक्तांनो, तुम्हीही आज या मंत्राचा अवश्य लाभ घ्या आणि हा मंत्र संपूर्ण 108 वेळा ऐका. या मंत्राने तुमच्या जीवनात आनंद येईल, दुःख नाहीसे होईल. भक्तांनो, खूप दिवस झाले तुम्ही रोज मंत्र ऐकता, परंतु तुम्ही कधीही 108 वेळा मंत्र पूर्ण ऐकला नाही. म्हणून भक्तांनो, तुम्हाला त्याचे फळ योग्य मिळाले नाही. भक्तांनो, आज ही संधी चालून आली आहे. तुम्ही हा मंत्र संपूर्ण 108 वेळा श्रवण करा आणि मग पहा तुम्ही तुमच्या डोळ्यांसमोरच कसा चमत्कार घडतो. तुमच्या आयुष्यातील सर्व दुःख नाहीसे होऊन तुमच्या जीवनात आनंदाची लहर येईल आणि लक्ष्मी तुमच्या घरी पाणी भरू लागेल. तुमची आर्थिक समस्या नाहीशी होईल. भक्तांनो, या मंत्राचा लाभ अनेक भक्तांनी घेतला आहे. आता तुमची वेळ आहे. आता मात्र हा व्हिडिओ स्किप करू नका. समोर मंत्र सुरू होणार आहे. तो मंत्र तुम्ही संपूर्ण 108 वेळा श्रवण करा. आणि स्वामींवर विश्वास असेल तर या व्हिडिओला एक लाईक करून कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा जयघोष करायला विसरू नका. मी केलेला जयघोष पाहून स्वामी माऊली आनंदाने तुमच्यावर आशीर्वादाचा वर्षाव करतील आणि तुमची जी इच्छा या व्हिडिओमध्ये तुम्ही स्वामींना बोलणार आहात ती लवकरात लवकर पूर्ण करतील. भक्तांनो,
असा कोणताच भक्त नाही की तो स्वामींच्या दरबारातून रिकाम्या हाताने गेला आहे. स्वामींनी प्रत्येक भक्ताची इच्छा पूर्ण केली आहे. आता तुमची वेळ आहे. तुम्ही स्वामींवर विश्वास ठेवून स्वामींच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा. म्हणजेच तुम्हाला असे चमत्कारिक मंत्र रोज श्रवण करायला मिळतील. तुमच्या समस्यांवर तोडगा मंत्रच आहे. मंत्र जो भक्त रोज श्रवण करेल त्या जीवनातील सर्व दुःखे ही नाहीशी होणारच. मंत्रांइतकी शक्ती कोणत्याच सेवेत नाही. मंत्र हे स्वयंभू आहेत, कुणी तयार केलेले नाहीत. म्हणून भक्तांनो, रोज मंत्र श्रवण करण्यासाठी तुम्ही या आपल्या आध्यात्मिक माहिती YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर भक्तांनो, जास्त वेळ न लावता आजच्या या प्रभावी, शक्तिशाली आणि चमत्कारांनी भरलेल्या मंत्राला सुरुवात करूया. ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः. 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 ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय
समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय
समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय
समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय
समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री
धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री स्वामी समर्थाय नमः।
स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनाय श्री 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 स्वामी समर्थाय